Hey my loves, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So आज मैं शेयर करने वाली हूँ beginners makeup kit and this beautiful stunning soft glam look which I know you will love. So please keep on watching if you're interested. And also this makeup kit is under 399 rupees. So first I have two different options for you for two different skin types. First one is silicone based primer. It's by the brand Eba. And the next one is Mars Hydra Glow Primer. अगर आपका dry skin type है तो आप use कर सकते हो. I'm using today Eba silicone based primer. Silicone based primers are for oily and combination skin people, and if you have dry to normal skin type then you can use any dewy hydrating primer like the Mars Hydra Glow. For the foundation I have two options for you. First one is Miss Claire Everyday Foundation and second one is Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. ये दोनों ही foundation हर एक skin type को सूट करेगा. Fit Me Foundation is available in 18 different shades, so I think you will find your perfect shade. And Miss Claire Foundation has 12 different shades. And for brushes I have two options for you again. One is from Cuffs and Lashes and another one is from Mars Cosmetics. I purchased these brushes set पे. अगर आप ये सिंगल खरीदने चाहोगे तो ये डेफिनेटली 399 के अंदर आपको मिल जाएगा हर एक ब्रशेज. एंड ये दो ब्रशेज इज माई ऑल टाइम फेवरेट ब्रशेज टू ब्लेंड माई फाउंडेशन. एंड वीक में एक बार ना आपको सेल्फ केयर जरूर करना चाहिए. इफ यू नीड अ प्रोडक्ट जो कि मल्टीपर्पज वे में आप यूज कर सकते हो, आपके फेस के लिए, अपने हेयर के लिए, आप किसी भी प्रोडक्ट्स में से मिक्स कर सकते हो, चाहे वो अपना DIY फेस पैक हो, हेयर मास्क हो. सो ऐसा ही प्रोडक्ट मुझे मिल गया है एंड दिस इज एड्स गुडनेस मल्टी यूज पाउडर. एंड ये बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है. लाइक मेरे पास है टर्मरिक एंड मुल्तानी मिट्टी. ये दोनों ही मेरे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. लाइक टर्मरिक से मेरा जो टैनिंग का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व होता है. एंड ये जो है मेरे पास दिस इज मुल्तानी मिट्टी. सो मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है कि आई हैव ऑयली टी जोन, आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन. सो ये मेरे ऑयल को, एक्सेस ऑयल को, सीबम को पुल आउट करने में हेल्प करता है. मेरे फेस को रखता है एकदम क्लीन. इट्स अ क्लीन मास्क ऑफ कोर्स. सो ये जो है ना ये पाउडर फॉर्म में आता है एंड आप चाहो तो इसे सेपरेटली यूज कर सकते हो. एंड अगर आप चाहो तो इसे दोनों को एक साथ मिक्स करके या फिर किसी भी 3 पाउडर 2 पाउडर्स को एक साथ मिक्स करके नॉर्मल पानी से मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने डेली फेस वॉश पे या फिर डेली शैम्पू पे मिक्स करके उसको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हो. तो ऐसे ना पाउच पैक में आता है, जिप लॉक पाउच पैक में आता है, तो इसको स्टोर करना काफ़ी ईजी हो जाता है. आपको अलग से बॉटल पे रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. एंड ऑल्सो ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि ये 100% प्योर और नेचुरल है. इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है. एंड ऑल्सो इट्स क्रुएल्टी फ्री. सो इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. एड्स गुडनेस का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा पर्पल, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे. मैं दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर जरूर चेक करना. बिकॉज नॉट ओनली दिस टू, बहुत सारा डिफरेंट वेरिएंट्स लाइक आमला, भृंगराज, लिकोरिज, बहुत सारा वेरिएंट जो है अवेलेबल है. I'm using Inside HD concealer. It's my current favorite super affordable concealer. This is like full coverage, has a very dewy healthy finish. So मैं इसका 2 शेड यूज़ करती हूँ. फर्स्ट आई यूज़ दिस 15 शेड नंबर 15 टू हाइड एनी डार्क स्पॉट्स दैट आई हैव. एंड आई एम यूजिंग दैट सेम ब्रश जो मैंने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था. काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है. एंड ऑल्सो लुक एट द कवरेज यू गाइस, इट्स beautiful. Next I use the shade number 20 to just highlight my center face, and again I use the same brush to blend my concealer. जो brush मैं यूज़ करती हूँ मेरे फाउंडेशन को blend करने के लिए, वो मैं वही same brush यूज़ करती हूँ मेरे concealer को भी blend करने के लिए. Well, if you want you can use a beauty blender, but I think beauty blenders are a bit tricky when it comes to beginners makeup. Next up we have one and only option for you, and this is Mars Transsetting Powder and my shade is Soft Light. It's available in total 5 shades. Banana भी है and Soft Light है, Bright वाला एक shade है. It's a very finely milled powder. काफ़ी अच्छे से आपको फेस को सेट कर देता है without making it heavy or cakey. Suits every skin tone. Next for the eyeshadow and my whole face I have only one option for you, and this is Mars highlighter, eyeshadow, blusher and bronzer palette. Yes, it's an all-in-one palette. And इस पे आपको मिल जाएगा matte shades, shimmery shades and also metallic glittery pressed glitter shade भी मिल जाएगा. इसके साथ also आपको मिलेगा highlighter, bronzer and 2 blush shade. Actually, if you are a beginner, you don't need too many brushes, just to do your whole face. You just need 3 or 4 brushes and that's it. And I'm using here Cuffs and Lashes eyeshadow blending brush, and you can purchase this brush again
सेपरेटली यहाँ पे आपको ना कस्टम लैशेस पे मिल जाएगा. एंड ऑल्सो यू विल गेट दिस ब्रशेज ऑन Amazon. आई थिंक आई विल प्रोवाइड अ लिंक अगर मुझे मिलता है तो Amazon का. एंड लेट्स कम टू द पैलेट अगेन. दिस पैलेट इज गॉर्जियस, हैज पिगमेंटेड मैट शेड्स एंड ऑल्सो द शिमरी शेड्स आर नॉट चॉकी, इजीली ब्लेंडेबल वाला शेड्स है, मैट शेड्स जो है. एंड फॉल आउट भी बहुत कम होता है आपको. एंड लुक एट द शिमरी जो शेड मैंने अप्लाई करी हुई यहाँ पे मेरे आउटर कॉर्नर की तरफ. ओ माय गॉड, इट्स पिगमेंटेड, इट्स ब्यूटीफुल. इस पैलेट का प्राइस है 399 रुपीज ओनली एंड यू विल गेट एन अमेजिंग पैलेट. ट्रस्ट मी, one of the best affordable palettes I've ever used. And I'm using that same brush pinch करके थोड़ा सा मेरे lower lash line को apply करने के लिए. And next for the eyeliner I have again one option for you. This is Swiss Beauty pen liner. Well, it's a very pigmented liner. Even if you are applying glitter eyeshadows, उसके ऊपर से ना ये liner काफी easily glide हो जाता है and it will give you that jet black, darkest black wala shade pigmentation. It's beautiful and also it's long lasting, waterproof, so a very good option. For the eyelash curler I'm using here Vega eyelash curler. Affordable yet काफ़ी अच्छा कर्ल जो है प्रोवाइड करता है. For mascara मैं आज Maybelline को नहीं दिखा रही बिकॉज मैं हमेशा वही दिखाती हूँ आपको, वो तो मेरा फेवरेट रहेगा ही. बट मेरे पास और 3 ऑप्शन है आपके लिए, विच इज NYB वॉल्यूम मस्कारा, ZM का मस्कारा एंड ऑल्सो यहाँ पे मार्स का फॉल्सीज मस्कारा भी है जो कि वॉल्यूम वर्जन है वो वाला. आई लव एक्चुअली वॉल्यूम वाला मस्काराज. सो ये 3 आपको 199, 299 एंड 300 के अंदर के मिल जाएगा, विच इज लाइक अफोर्डेबल and also super good in quality. Next for the eyebrows I have Wet n Wild retractable eyebrow pencil in the shade dark brown. इसमें टोटल आपको मिलेगा 3 shades and I think ये इंडियन स्किन टोन के लिए, इंडियन ब्राउ टोन के लिए ना काफ़ी अच्छा शेड आपको मिल जाएगा. ब्राउनिश एशी शेड मिल जाएगा एंड ऑल्सो देयर इज डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड. इसका जो फॉर्मूला है ना इट्स वेरी गुड, इट्स नॉट टू स्टिकी and it has just perfect amount of waxiness in it and also the spoolie works really fine. Okay, so next if you want to invest in separate face palettes then I have this amazing option for you. This is Color Essence का bronzer and I'm using Custom Lashes का angular brush to apply my bronzer and this is a beautiful super affordable bronzer. Trust me, it's a matte bronzer कम contour कह सकते हो आप. इसमें I think इसमें I think एक ही शेड अवेलेबल है. सो या परफेक्ट फॉर माई स्किन. मेरा स्किन जो है मीडियम स्किन टोन के अंदर आता है. अगर आपका फेयर स्किन टोन है या मीडियम स्किन टोन है उसके लिए तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है ये वाला शेड एंड इसको ब्लेंड करने में काफ़ी ईजी है. परफेक्ट फॉर बिगिनर. Next for the blush I have Faces Canada का blush is the new launch. This blush is not too pigmented which makes this suitable for beginners. You can build the pigmentation also, it doesn't look chalky at all, it blends beautifully and the staying power is also very good. For the makeup setting spray I have Mars Seal the Deal makeup setting spray. It has fine spray with a beautiful subtle fragrance in it and which sets the makeup and really makes it super long lasting. For the highlighter I have my all time favorite Sugar mini highlighter in the shade Metal Medal and it will last you for years. ये ख़त्म नहीं होगा trust me. And you can definitely see मैं same angular contour brush को use कर रही हूँ मेरे bronzing के लिए, blush apply करने के लिए and also highlighter को apply करने के लिए. Look at the shade you guys, it's bomb, definitely a bam highlighter. For the lipstick I have here 4 different options for you. First one is if you want a liquid lipstick, definitely you should check out Cuffs and Lashes liquid lipstick and liquid lip glosses. काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, 99 के अंदर आपको मिल जाएगा. एंड अगर आपको चाहिए बुलेट लिपस्टिक देन डेफिनेटली मार्स का मैटिनी लिपस्टिक या फिर मार्स का नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक या फिर इनसाइड का 24 आवर लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो. आई एम यूजिंग हियर टुडे इनसाइड 24 आवर लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. काफ़ी क्रीमी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड दे आर मैट. सो वन ऑफ माई फेवरेट अफोर्डेबल ब्रांड्स एंड शेड्स बाय द वे. So yeah, this is my complete look. And next, the last but optional step is false lashes. If you want then you can use this Mars new launch eyelashes. इसका प्राइस है, हर एक का प्राइस 99 रुपीज़ एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट नेचुरल लुकिंग वाला लैशेज़ है. डेफिनेटली गुड फॉर बिगिनर्स बिकॉज ये काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैंड, द लाइट वेट बैंड इट हैज़. And yeah, that is it. I hope you guys enjoyed this video, learned something, and yeah, this is my final look.